I hope you are doing great. और आज हमारे सामने 2018 Jeep Compass 4x4 Limited Variant. So this is the walk around of the car. आज हम इसका करने वाले drive review. So this is the car. Let's have a look. Let's go driving India most loved, most followed, most awarded SUV. आज गाड़ी का सिर्फ अंदर से मैं आपको बताऊंगा. I'm gonna tell you how the good this car drives. जैसी गाड़ी के कैबिन में आता है देयर इज अ वेरी गुड कुशनिंग सीट्स, प्योर लेदर सीट कवर्स है. साइड में आपको लेदर मिलता है. दिस इज ऑल सॉफ्ट टच. यहाँ पे वन टच ऑटो डाउन है, वन टच ऑटो अप है. सो दिस इज द विंडोज. साइड मिरर आपको कॉन्वेक्स वाले मिल जाते हैं. इफ यू कैन सी दिस लाइन फॉर ब्लाइंड स्पॉट. एंड दिस इज द कैबिन. दिस इज ऑल सॉफ्ट टच, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन. दिस इज अ 4 व्हील ड्राइव लॉक. आपको यहाँ मोड्स मिल जाते हैं, वेरियस मोड्स. लेट मी शो यू. दिस इज स्नो मोड, सैंड मोड, मड मोड. लेट्स कीप इट टू ऑटो. ऑटो मोड में यूजली बाय डिफॉल्ट फ्रंट व्हील ड्राइव चलती है गाड़ी. एंड दिस इज अ लुक. स्टीयरिंग व्हील इज व्हाट यू गेट टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक. सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है. आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है. These are the whole view of the car. पार्किंग ब्रेक ऑटो इंगेज हो जाती है. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है आपको. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हो. अमेजिंग कार इज दिस. लेट्स गो ड्राइविंग एंड लेट मी टेल यू हाउ दिस कार ड्राइव्स. दिस इज द इसका साइड डोर पैनल. फ्रंट दोनों पावर विंडोज आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप मिलते हैं, एंड बैक वाले ऑटो डाउन मिलते हैं. सो लेट्स गो ड्राइविंग. गाइज, अगर आपने गाड़ी में सीट बेल्ट ऑलरेडी पहनी हुई है, यू जस्ट हैव टू एंगेज द फर्स्ट गियर. दिस हैंड ब्रेक एंगेज नहीं करनी पड़ती. यू कैन जस्ट मूव लाइक दिस. द व्यू ऑफ द कार इज जस्ट अमेजिंग. इट हैज गॉट 4x4 कैपेबिलिटी. दिस कार इज बिल्ड फॉर अ पर्सन हु लव्स ड्राइविंग अक्रॉस द हाईवेज, across the mountains, because it has got 4x4 good ground clearance and a very amazing high speed stability. आप इसको 200 की स्पीड में भी चलाओगे तो it's gonna be very stable car, and the view is great. Fuel efficiency comes around 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर in a diesel 2.0 multijet Fiat का इंजन, which is not bad because डीजल के प्राइसेस भी कम होते हैं. तो आपको पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से 16 की माइलेज देती है, which is not at all bad in 2025 if you are driving this big beast car. So this is the view of the car. Amazing torque. अभी मैं 5th gear पे हूँ, around very less speed. Let me show you how much I am driving at. I'm driving at 51 km, and if I press the throttle, it has got good power and torque. But once this car crosses 1800 RPM, this goes marvelously. Boom boom. So here we'll do cornering. अमेजिंग स्टेबिलिटी. आपको SUV वाली फील ही नहीं आती. आई हैव ड्रिवन XUV 700 ऑफ द वर्ल्ड, स्कॉर्पियो एंस, स्कॉर्पियो, इनोवा क्रिस्टाज, फॉर्च्यूनर, बट दिस कार इज जस्ट अमेजिंगली पैक्ड विद ऑल द फीचर्स एंड परफॉर्मेंस. कॉर्नर्स पे इतनी ज़्यादा स्टेबल है, यू विल फील लाइक यूर ड्राइविंग अ SUV बट अ सेडान लेवल ऑफ कंट्रोल, विच इज़ जस्ट वेरी गुड फॉर दिस कार. सो guys, the power and torque is amazing. We'll go do off-roading also today, and I will show you a few clips. If it can drive on sand, we will be able to see all the 4x4 transmission getting engaged. Whereas you don't get any cruise control in this car. 26 लाख की गाड़ी आती थी, ये 25 लाख की ऑन रोड दिल्ली, एंड क्रूज कंट्रोल नहीं आता था उस टाइम पे. बट नाउ डेज यू गेट क्रूज कंट्रोल, बट आई डोंट थिंक यू नीड अ क्रूज कंट्रोल इन दिस कार. दिस इज सो कंफर्टेबल, सो गुड. But definitely cruise control is a good thing, and ventilated seats भी नहीं आती. So that is the only thing I think is missing in this car. Rest, it's a fully packed car. You will just love driving it crazy. Let's give a full throttle at 3rd gear. This is how it pulls. I'm not even touching the steering wheel. This is just amazingly hot, amazingly stable, amazingly lovable driving car. If you are a driving enthusiast and you have a budget of 8 to 10 lakhs in used car market, just go for this beast. You will love driving it crazy. So guys, this is the short review. I'll come back again. Tada, bye bye, see you. So guys,
I'm in Aravali Hills of Gurgaon with this beast, marvelous car, Jeep Compass. It has always been my dream to drive this car since I was child. This car was launched in 2018, and since then, 2018 to 2020, this car has made amazingly, brand value and name among its users and people who are aspiring to buy a SUV in India. The level of driving comfort, the feel, the features you get in this car is amazingly good. It's amazingly good. This car has only been discouraged in India just because of its service. Its service is hell expensive. Average service cost जो आपको आती है गाड़ी की, it comes around 15 to 20,000. That's the average minimum you can have. उससे नीचे कहीं नहीं आपको सर्विसेज की होती जीप के सर्विस सेंटर पे, which is very expensive for Indians to do that, because Indians can spend money at one time. They can pay EMIs, but when they have to pay service cost of 15 से 20,000 रुपए, where there are cars like Fortuner, Innova, Mahindra's XUVs जहाँ पे 10,000 में काम हो जाता है, वहाँ पे this car feels little bit expensive, which is about general service and parts वगैरह भी इसके चेंज होते रहते हैं. कुछ इश्यूज आ जाते हैं छोटे मोटे, due to which this car has not been very great. But this is the thing, the car is just amazingly good because of its driving and features. Let's go off-roading, guys. We're gonna drive this car over this off-road area now. You can see. So car is not moving. Let's do 4-wheel drive lock and sand mode since it is a sand. It's not moving much ahead. Maybe. Let's see what's the condition of the car from outside. This is the thing. Car is badly inside. This doesn't allow the Jeep Compass to move forward. I don't want to risk it with this new car someone has bought. Let's go back. Yeah. So guys, this engine is powered by 172 bhp of horsepower and 350 Nm of torque. 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर Fiat का मल्टी जेट डीजल इंजन है. And this car is just amazing because आपको used car segment में something so classy, something so good for highways and mountains all together packed in single machine नहीं मिलता आज के टाइम पे. Even if you go for Cretas, there is no 4-wheel drive. Scorpion is too huge for a car. It's not a car, I would say globally कोई उसको पसंद करेगा, but it's Indian loving car because of the daddy looks it has. But when we talk about class and muscularity along with each other in a single package, then it's only Jeep. That is why they say it's only one, for a reason. Another thing is key. You can go anywhere, do anything with this car. That's the best part, which no one else can change about it, and separates it from every other car इस segment में. इसी segment में आप देखो मैं अभी you can see a lot of things, battery voltage, thousands of things on the instrument cluster. Speed आप देखो कितनी अच्छी पकड़ती है, टॉर्क AC के साथ है अभी. It goes like a rocket. There's nothing like this.
and the amount of stability it has, none of the Fortuners or XUVs can have. XUV 700 do have good stability, but it's a huge car, so you feel the back extra weight of third row. इस गाड़ी में वो नहीं होता. It's very nicely, designed. Suspension is great. So that is the thing about Jeep Compass. No one else can, beat it at all. This is the thing. Lot of lists in which levels, and the music system is just amazing for this car. This feels so much like a rocket that you're only focused upon driving. बहुत ही limited चीज़ें हैं, features भी limited है जो ज़रूरत के हैं. There's nothing so fancy like Creta's of the world. So आप जब भी screen भी देखोगे, everything you will see, it's a very non-distracting driver's car. Yeah, that's all for this video. I hope you liked the video of Jeep Compass. I will bring more. Thank you so much.